Okay, so very good morning. So we have discussed after the working principle of electric discharge machining process. Okay, so in this process, what happened? Electric spark will generate, and the tool is connected to the negative terminal, and workpiece is connected to positive terminal, and a gap between tool and workpiece is maintained, and electric current pass through this tool via electric dielectric fluid. Okay, तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रहती है. तो this through dielectric fluid current is high current is passing from a tool to workpiece. Okay, and as the current is passed means so what happened, uh, electron will generate from the tool. Tool is connected to negative terminal. That electron is generated from the tool, and these electrons will move from towards the workpiece. And as these electrons move towards the workpiece, then these electrons will collide with the particle of the dielectric fluid. जो dielectric fluid use करूँगा उस particle से this electron will collide, and after collision the dielectric fluid will ionize. Okay, and as this dielectric fluid ionizes, then this process will be cyclically repeated, repeating the collision between electrons and particles of what? Particles of dielectric fluid. Okay, so dielectric fluid and particles के साथ जो collision होते रहेगा, and number of electrons and ions will increase. Okay, as the number of electrons and ions increase, then these electrons will move towards the workpiece. Okay, towards the workpiece. क्यों workpiece की तरफ आएगी? क्योंकि workpiece जो है, this workpiece is connected to positive terminal. तो इसमें positive workpiece is connected to positive terminals, and the electrons जो है उसको electrons are in means negative. ओके, इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेगेटिव है, अब वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो दिस पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, देन दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द वर्कपीस. एंड जो आयोनाइज्ड है, आयन डायरेक्टिव फ्लूइड जो आयोनाइज्ड हुआ है, दिस आयोनाइज्ड विल मूव टुवर्ड्स द tool. Two tool की तरफ आएंगे. ये tool is connected to the negative terminal, so tool will attract the ion. Okay, and as these electrons move towards the workpiece, then what happened? This electron actually high energy, and this high energy electrons will uh, स्ट्राइक ऑन द वर्कपीस. वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे. जिससे स्ट्राइक करेंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैव a high potential energy, and this potential energy will convert into the high heat energy, and immediately the material will melt at a localized area material melt होगी, and the melting material will vaporize. Okay, तो जो मेल्ट होगी, दिस इज एक्चुअली एज ए नॉन एज ए क्रेटर. Okay, so this after melting the material will vaporize, and this melting actually known as a crater. So here a heat affected zone will generate. So this is actually heat affected zone, and this portion actually material melt from the workpiece, and this will vaporize. This actually electrons, all the uh, negative ions are the electrons, and positive are the cations. Okay, so this electrons will move towards this towards this workpiece, and positive ions cations will move towards the tool.
And here, so these positive ions also here strike on the tool, so there is a chances of getting ahead of the tool. It will be wire होने का chances है. So that's why the tool have made a very high strength and wire resistance material like tungsten. Okay, tungsten से बनाए होते हैं. Okay, so this is the working principle. Now जो इलेक्ट्रिक की करंट सप्लाई होगी, तो दिस एक्चुअली डीसी वोल्टेज सप्लाई होते हैं, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डायरेक्ट करंट, हाई डायरेक्ट करंट, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है नेगेटिव द टूल. तो ये अगर ऑल्टरनेटिव करंट पास करूंगा तो एक टर्मिनल चेंज होते रहते, चेंज होगी. And positive will change to negative, negative will change to positive alternatively. Okay, so to avoid this, a direct current supply. Okay, and not only the direct current, इसमें एक पाल्स करंट पास किया जाता है. पाल्स करंट मीन्स इसमें मीन्स एक पाल्सिंग ड्यूरेशन रहती है. सपोज 1 माइक्रो सेकेंड के लिए मैं करंट पास कर रहा हूँ, देन ऑफ कर रहा हूँ, देन फिर 1 माइक्रो सेकेंड के लिए फिर मैं करंट पास कर रहा हूँ. ओके, तो दिस मीन्स पाल्सिंग टाइप के करंट पास किया जाता है. कांस्टेंट पर करंट पास नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट करंट पास करूंगा तो देन द मटेरियल लोकलाइज एरिया में मेल्ट नहीं होगी. उसके नियर अबाउट दिस लोकलाइज एरिया और कुछ एरिया में मेल्ट होने का चांसेस है. तो पल्सिंग टाइप के करंट पास किया जाता है. मीन्स सपोज 1 माइक्रो सेकेंड और 5 माइक्रो सेकेंड के लिए मैंने पास कर रहा हूँ लाइक दिस. मीन्स सपोज इसमें ऑफ ऑन रहता है. ओके, इनसे जो करंट पास होगी ऑफ ऑन होगी. तो ये ऑन टाइम मीन्स तो करंट मैंने पास किया, उस टाइम तक मैंने ऑन रहा. सपोज दिस इज 5 माइक्रो सेकेंड. ओके, तो 5 माइक्रो सेकेंड के लिए मैंने ऑन किया, देन अगेन द करंट इज ऑफ. ओके, ऑफ फॉर दिस टाइम. सपोज 2 माइक्रो सेकेंड के लिए करंट ऑफ है. ओके, सपोज 2 मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के लिए ऑफ है. देन फिर करंट ऑन हुआ, एंड दिस करंट इज ऑन फॉर अगेन 5 मिली सेकेंड. ओके, तो दिस एक्चुअली वन साइकिल विल कंप्लीट. सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑन हुआ, मीन्स ऑन किया, करंट पास किया. करंट पास किया कितना टाइम तक, तो 1 मिली सेकेंड. देन ऑफ किया कितना तक, तो सपोज 2 मिली सेकेंड. ओके, सो दिस इज वन साइकिल कंप्लीट हुआ. ओके, सो लाइक दिस ए पल्स करंट पास किया जाता है. क्लियर? और ये पल्स करंट पास किया जाता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट करंट पास करूंगा तो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन जनरेटर होगी, स्पार्क होगी, देन जो मेल्ट होगी कॉन्स्टेंटली मेल्ट होगी. मीन्स जो मैचिंग क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा. ओके, तो इलेक्ट्रोड जो मटेरियल है, इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज करूंगा. दिस इलेक्ट्रोड मटेरियल शुड अंडरगो है, मीन्स दिस मटेरियल शुड हैव मोर वायर रेजिस्टेंस. ओके, जो टूल जो यूज करूंगा, टूल, so this tool should have more wear resistance. क्योंकि जो आयोनाइज्ड आयन है, मीन्स डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो यूज कर रहा हूँ, और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आयोनाइज्ड होगा ड्यू टू वो इलेक्ट्रॉन मीन्स कोलाइड हो, द कोलाइड the particles of the particles of the dielectric fluid with the electron. इलेक्ट्रॉन के साथ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के जो पार्टिकल है वो कोलाइड होगी एंड आयोनाइज होगी. दिस आयोनाइज विल मूव टुवर्ड्स द टूल. ओके, टूल मीन्स इलेक्ट्रोड मटेरियल. ओके, इलेक्ट्रोड जो यूज करूँगा, तो ये जो आयोनाइज जो पॉजिटिव आयन से कैटायन से वो टूल के तरफ आएगी,
ट्राई करेगी टूल वायर होने का चांसेस है। So this tool material should be more wire resistance. Okay, and for the localized temperature rise has to also be less. The properly choosing its proper uh, properties or even when temperature are increases, there should be a less melting. The characteristics of the electrode material should high electrical conductivity. Electrical conductivity high होना चाहिए uh, like copper. Okay, तो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉक जो मशीनिंग होगी इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। तो दिस इलेक्ट्रोड शुड बी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई हाई थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स जो पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोड क्या पर इलेक्ट्रॉड क्या करो वहाँ पर क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे तो और एक हीट जनरेट होगी। अगर इलेक्ट्रोड अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी देन दिस हीट will transfer. Okay, and the heat will transfer very rapidly, so there will be no any effect of heat on the tool material. Okay, high density होना चाहिए, high melting point होना चाहिए, and very cheap होना चाहिए, easy manufacturability होना चाहिए. Okay, so these are the material of electrode. And this example of the electrode used in industry like graphite, electrolyte, oxygen-free copper. And so this is one type of copper that have oxygen-free. Okay, electrolytic oxygen-free copper. Um, and another type of copper that is tellurium copper. So इसमें tellurium ऐड किया जाता है 0.5%, it's 99% of copper. Brass, so you know the brass is a copper and alloy of copper and zinc. So, so this type of material are used as an electrode. Okay, for electrode. Copper tungsten and silver tungsten are used for making deep slot under the pore flushing conditions, especially in tungsten carbide. It offers high machining depth as well as has a low electrode wear. Copper or copper tungsten material is very suitable for this so for making the electrode. Okay. There should be provision to move the electrode. Electrode means actually the tool. Okay. So this the tool have to be moved to means according to the cutting profile, and uh, so in addition to the servo controller kit, the tool electrode may have an additional rotary or arbitrary motion. Okay. Electrode rotation helps to solve the passing difficulty and counter harm to the machining small faults with EDM. Means अगर ये if you move the tool then actually what happen in left दिशा machining तो जैसे machining होगी मीन्स मेटेरियल बेंड होगी एंड व्यापार होगी। तो जो व्यापार होने के बाद इमीडिएटली और वेपर मटेरियल कूल होकर और डेब्रिस क्रिएट होगी एंड this डेब्रिस will fill a spot between the gap between the electrode and the um, workpiece. Okay, so, so suppose ये workpiece है, so this is actually tool. Means the machining will perform according to the tool geometry. So this is suppose tool. So are relevant, I have the material will melt from this region and the after melting the material when this material comes uh, into this dielectric fluid then
this will solidified also, and a debris will generate, means इसमें जो material remove हो रहे हैं और इसमें stored होगी. Okay. तो ये जो debris जनरेट हो रही है और मटेरियल जो रिमूव हो रही है, इसको यहाँ से मुझे रिमूव करने की जरूरत है. तो रिमूव करने की जरूरत है, अगर सारे मटेरियल यहाँ से स्टोर हो जाएगी, तो देन दिस रिमूव मटेरियल स्टोर्ड यहाँ स्टोर होगी, एंड टूल के साथ ये जो आरपी से वो कनेक्ट हो जाएगा. एंड जैसे टूल एंड आरपी कनेक्ट हो जाएगी, देन देयर विल चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट. क्योंकि जो टूल है, टूल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एंड जो आरपी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. ओके. तो इसमें करंट पास हो रही है. ओके. एक गैप मेंटेन की जरूरत है. अगर गैप नहीं मेंटेन होगी, अगर जो मटेरियल रिमूव हो रही है वो स्टोर हो जाएगी, एंड जो स्टोर होने के बाद अगर टच हो जाएगी टूल एंड वर्कपीस, टूल एंड वर्कपीस जैसे टच होगी, तो एक शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस है. तो ये जो मटेरियल रिमूव हो रही है, ये कैविटी से निकलना चाहिए. ओके. तो इसलिए फासिंग की जरूरत है. So this is all the passing, and passing is nothing but to remove the material from this cavity. Okay. So the movement of the tool, if you move the tool, then this passing means passing of this the removed material will easy. Okay, means easily so remove the one. Okay. इलेक्ट्रोड वायर का जो टूल यूज कर रहा हूँ, वो टूल वायर होती है, क्योंकि वायर होती है, क्योंकि जो आयन है वो टूल के अगर strike on the tool. Okay. And the tool also, tool or electrode also meant, and so wire out of the tool also. Okay. तो किस टाइप की वायर होगी, सपोज ये जो टूल है, टूल की शेप जस्ट रेक्टेंगुलर टाइप की, ये बॉक्स, ये ब्लॉक है. ओके. सो दिस रेक्टेंगुलर टाइप की है, और उसका होने के बाद टूल वायर जो होती है, जैसे कॉनकेव टाइप की सरफेस जनरेट होगी. ओके. मीन्स इतना अमाउंट वायर आउट हो गया. ओके. इतना अमाउंट ऑफ वायर आउट हो गया, एंड ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में ज़्यादा वायर होती है कंपेयर टू मिडिल. मीन्स जो सरफेस जो वायर होने के बाद जो शेप मिलेगी, अगर फ्रंट व्यू ये करूँगा, तो इस टाइप की एक कॉनकेव, सॉरी, इस टाइप की एक कॉनकेव सरफेस मिलेगी. ओके. कॉनकेव सरफेस मिलेगी. तो जैसे टूल वायर के एक ऐसे कॉनकेव सरफेस मिलेगी, तो मशीनिंग के टाइम वर्कपीस जो मशीनिंग होगी, मशीनिंग का जो तो अगर ऐसे टैप किए करूँगा, तो इस टाइप की प्रोफाइल मिलेगी. मीन्स जो डेप्थ जो हो रही है, तो ये डेप्थ यूनिफॉर्म नहीं होगी. इसमें डेप्थ कम है, तो इसे मिडिल में ज़्यादा होगी, एंड जो इनिशियली जो डेप्थ है वो कम होगी. ओके. मीन्स दिस विल हैपन अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ दिस टूल. ओके. टूल की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगी. Okay. So this wire out of the electrode, this is the formula. So this WOT is the wire rate of the tool in millimeter mercury per minute. I is the current, ATM current in ampere. T is the melting point of tool in degree centigrade, and T are the ratio of the workpiece to tool electrode melting point. Means this is the ratio between the melting point of the workpiece and the melting point of the tool. Okay. And the relation is WT is, this is the wire rate is 11 into 10 to the power 3 into I into T is over 2.38. So from this formula, means you know the current in ampere, melting point of the electrode, and this melting point of the tool, then we can
calculate the route of the tool means amount of error in the tool part. So what type of dielectric should we use? An EDFM material removal when the fast resources thermal evaporation. So thermal evaporation in thermal processing a research to be carried out in absence of the oxygen. Okay, means now जो material removal होगी in EDM process. So this material is removed uh, by the thermal evaporation. Thermal evaporation means material melt होगी and immediately the melting material will evaporate. Okay, so this thermal evaporation can uh, for better thermal evaporation air should be the oxygen free means absence of oxygen. Okay, means जो surface से evaporation होगी वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए. Okay, अगर इस surface से oxidize then thermal evaporation so performance of thermal evaporation is not coming. Okay, so oxidation leads to poor surface conductivity. Okay, so that's why so thermal electrical conductivity uh, अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगी सरफेस देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा नहीं होगी. ओके, तो मेनली जो ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए. ओके, तो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करूँगा इस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड शुड बी ऑक्सीजन फ्री. ओके, and not only oxygen free electric fluid uh, uh, तो इलेक्ट्रिकली स्ट्रांग होना चाहिए. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड का इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस होना चाहिए. मीन्स अगर पास स्मॉल करंट एंड द डायरेक्टली फ्लूइड आयनाइज then it will still make effect on the EDM process. तो means अगर मैं थोड़ा सा करंट पास करता हुआ एंड डायल्यूटिव फ्लूइड आयोनाइज हो जा रही है ये नहीं होना चाहिए. ओके, मीन्स डायल्यूटिव फ्लूइड को थोड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक. ओके, बट it should ionize to hand electrons collide with the molecule. से इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए तो मैं सफिशिएंट करंट पास करता हूँ बट आयोनाइज नहीं हो रही है. ओके, तो डायरेक्टली फ्लूइड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंटेन करना चाहिए. इस टाइप की मीन्स इसको ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस होना चाहिए. मीन्स अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पास करूँगा देन डायरेक्ट फ्लूइड आयनाइज हो जा रही है फिर वो भी नहीं होना चाहिए. इवन अगर ऐसे भी नहीं होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हो बट आयनाइजिंग हो रही है. ओके, so dialectic fluid actually are very important in the world. Mainly जो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज किया जाता है दैट इज केरोसिन और deionized वाटर. ओके, so three important functions of dielectric medium that is so dielectric fluid act as a insulation between the tool and workpiece. इस इंसुलेशन से एक काम करेंगे किसी जो टूल एंड वर्कपीस है तो दिस डायलेक्ट्रिक फ्लूइड मेंटेन a gap between the tool and workpiece. Okay, and this is insulation. Okay, means this dielectric fluid works as a insulation between the tool and workpiece. Okay, अगर ये insulation means this will and not means act as a insulation then not only happen uh, there may be chances of getting the short circuit. Okay, क्योंकि टूल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है एंड ऑफिस जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है. अगर दिस टू टर्मिनल्स जो बीच में गैप है उस गैप में अगर मैंने इंसुलेशन इंसुलेशन नहीं ये करूँगा
तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। So this dielectric fluid will act as a insulation between the pool and the workpiece. Okay, and this dielectric fluid also works as a coolant. Okay, means workpiece and electrode हमारी हीट हो जाती है क्योंकि जो मटेरियल रिमूव होती है वो मेल्टिंग एंड एवापोरेशन मेल्टिंग एंड एवापोरेशन टेक्निक से होती है लोकलाइज एरिया में मेल्ट हो जाती है एंड एवापोरेट होती है मीन्स वापिस एंड इलेक्ट्रोड तो बहुत और हीट हो जाती है तो इसको कूल करने के लिए जो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड इज वापिस कूलेंट okay and this dielectric fluid also is a flask flasking means तो मैंने बता रहा था मीन्स इन टूल एंड वर्कपीस से जो मटेरियल वर्कपीस से जो मटेरियल रिमूव हो रही है वो टूल एंड वर्कपीस के बीच में वो कलेक्ट होती है तो मीन्स उसमें डेब्रिस फॉर्म में उसमें हमारे अगर उसको मैंने खास करके नहीं रिमूव करूँगा तो आफ्टर समटाइम्स क्या होगी टूल एंड वर्कपीस में जो गैप है वो गैप घटता जाएगा ओके एंड टूल एंड वर्कपीस टच हो जाएगी ओके क्योंकि जो मटेरियल रिमूव हो रही है उसका अगर मैंने नहीं फ्लास सर्चिंग करूँगा तो उसको फ्लास ऑफ करके उसको निकालना है so this dielectric fluid also perform this working. So the dielectric fluid that this फॉर्म हो रही है इसको फ्लासिंग और करके उसको निकाल दिया जाता है ओके so this flassing one of the important factors in a successful EDM operations in the removal of the debris or chips. Okay from the working gap okay so gap between tool and the working तो उसी गैप से डेब्रिस और चिप्स को निकालने के लिए है फ्लशिंग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है उसको हाई प्रेशर में फ्लो किया जाता है so that debris and chips will be moved out from this cavity okay and this is called the flushing okay so flushing process of introducing clean filtered debris fluid into the park gap. Okay, if flushing is applied incorrectly, it can result in erratic cutting and poor machining condition. Flushing of debris plays a major role in the maintenance of the stable machining and the achieving of close tolerances and high surface quality. तो फ्लशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसे जैसे फ्लशिंग करना चाहिए नहीं तो सरफेस क्वालिटी नहीं मिलेगी टॉलरेंस गुड टॉलरेंस नहीं मिलेगी ओके inadequate flushing can result in arcing and decrease the dielectric life and increases the product of time okay other time जरूरत होगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लशिंग हो जाती है नॉर्मल फ्लो रिवर्स फ्लो जेट फ्लशिंग एंड इमर्शन फ्लशिंग नॉर्मल फ्लो मीन्स इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो पास किया जाता है ड्राई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो पास किया जाता है तो ये टूल मीन्स जो टूल के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड पास किया जाता है मीन्स तो इसमें टूल है तो इन टूल के अंदर डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड पास किया जाता है एट ए वेरी हाई प्रेशर एंड ए वेरी हाई प्रेशर इससे पास किया जाता है ओके एंड यहाँ जो डेब्रिस और चीज कलेक्ट होगी तो वो हाई प्रेशर ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड दिस विल remove away from the cavity. So this debris will remove away from the cavity. Okay, so ये normal flow है and the reverse flow means just opposite means इसमें
डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो पास किया जाता है, साइड से पास किया जाता है, एंड इसमें जो डेब्रिस कलेक्ट होगी, दिस डेब्रिस विल रिमूव अवे फ्रॉम दिस कैविटी थ्रू दिस इनर पाइप, यहाँ से। So this is actually outlet, dielectric outlet in case of reverse flow, and this is the dielectric inlet, means dielectric यहाँ से pass किया जाता है नॉर्मल केस में, एंड रिवर्स केस में डाइलेक्ट्रिक यहाँ से आउटलेट होती है, यहाँ से डाइलेक्ट्रिक इनलेट होती है, एंड मिडिल से डाइलेक्ट्रिक आउटलेट आउट से निकलना। ओके, so this normal flow actually is sometimes undesirable because it produces a tapered opening in the orifice. So orifice opening means तो ये जो orifice के ऊपर जो मीन्स अगर ड्रिल करूँगा तो ये ओपनिंग जो है इसमें एक मीन्स टेपार्ड टाइप, इस टाइप की होने का चांसेस है। ओके, जैसे ड्रिल जो होगी इस टेपार्ड टाइप की होने का चांसेस है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी इन केस ऑफ नॉर्मल फ्लो। ओके, okay. So this is actually flushing. So these are the process parameter of ETM. आवाज आ रही है ना मेरा? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, so these are the process parameter, means once very well change कर पाऊंगा, and this process parameter will affect the performance of the EDM process, electrochemical machine process. So like open circuit voltage, working voltage, maximum current, pulse on time, pulse duration actually. Okay, so this calculation is actually micro millisecond. The pulse of time, T of gap between the workpiece and the tool. Okay, so that is the spark gap. Okay, means gap between the tool and the workpiece. This is called the spark gap. The polarity, straight polarity. Okay, the dielectric medium means this type of dielectric is cut out, and external passing through the uh, spark gap means अगर कोई और external passing use करता है। Okay, so these are the process parameter, कितनी वोल्टेज यूज कर रहा हो, मैक्सिमम करंट कितनी है, पासिंग ऑन टाइम कितनी है, ऑफ टाइम कितनी है, ऑन टाइम अगर ज़्यादा होगी ज़्यादा टाइम से करंट पास होगी, ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगी। ओके, ऑफ टाइम कितनी है, ऑफ टाइम में भी इफेक्ट करेंगे। जो गैप है, गैप बिटवीन द वर्कपीस एंड टूल, तो कितनी गैप है। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज कर रहा हूँ, किस टाइप की डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहा हूँ, केरोसिन और नाइट्रो आटा, 10 किलो आटा, 2 किलो आटा यूज नहीं किया जाता है, उसमें केरोसिन होने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, एक्सटर्नल पासिंग यूज कर रहा हूँ कि नहीं। ओके,
Another ADM process, sometimes wire are used uh, um, for cutting the material, and this process is called the wire ADM. So, suppose this is a EDM प्रोसेस ही है, बट इसमें क्या कर रहा हूँ मैंने एक वायर जो टूल है, तो दिस टूल एक्चुअली वर्क दिस वायर, जो वायर पास कर रहा हूँ, दिस वायर इज दिस वायर इज वर्क एज ए टूल। ओके, ये वायर पे पास कर रहा हूँ, ये वायर वर्क एज ए टूल। उसमें जो डायल तो इलेक्ट्रोडिस कर रहा था ना ईडीएम में, इसमें एक वायर मैंने यूज कर रहा हूँ, दिस वायर है वर्क एज ए tool. Okay, and this wire is connected to a negative terminal. Okay, this wire is connected to Okay, sir. negative terminal. Okay, so क्या होगी इस जो ईडीएम प्रोसेस है वो सेम प्रिंसिपल फ्लो होगी। ओके, है ना, सेम प्रिंसिपल फ्लो होगी। मीन्स दिस वायर से इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी, दिस इलेक्ट्रॉन विल मीन्स मूव थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ओके, इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई किया जाता है। ये जो नोजल मीन्स पाइपलाइन है, नोजल है, इससे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई किया जा रहा है। ओके, at a high pressure and velocity to remove the materials from cavity. Okay, uh, तो ये जो वायर जो मैंने यूज कर रहा हूँ सेम प्रिंसिपल सेम है। तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड में वायर यूज कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड मैंने वायर को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव एंड जैसे मूव होगी ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसके साथ कोलाइड होगी एंड आयनाइज होगी, दिस एंड दिस प्रोसेस विल रिपीटेड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर जनरेट होगी, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द वर्कपीस, ये वर्कपीस है वापस से तरफ मूव होगी एंड इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक करेगी ऑफिस के ऊपर एंड स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, जहाँ स्ट्राइक करेगी वहाँ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड ऐसे इवापोरेट होगी। सपोज यहाँ स्ट्राइक किया है तो जो जहाँ वायर है वहीं स्ट्राइक होगी, एक लोकलाइज्ड एरिया पर स्ट्राइक होगी। ओके, सो वहाँ से मटेरियल मेल्ट होगी एंड इमीडिएट मेल्ट होगी एंड इमीडिएट वेपराइज हो जाएगी यहाँ से। तो अगर ये जो वायर मैंने यूज कर रहा हूँ, अगर ये वायर को मैंने मूव करूँगा, सपोज मेरा टेंसाइल स्पेसिमेन बनानी है, मीन्स इस टाइप की एक इस टाइप की मुझे एक मशीनिंग की ज़रूरत है। ओके, फ्रॉम दिस सीट, ये सीट मेटल है, वहाँ से मैंने ये प्रोफाइल काट करूँगा। तो इफ आई मूव दिस वायर अलोंग दिस प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है, तो ये अलोंग प्रोफाइल अगर मैंने वायर को मूव करूँगा, देन द this sheet metal will cut along this profile and जो डिजायर्ड शेप है और डिजायर्ड शेप इनसे इस टाइप की मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, so this wiring is a very hard precision metal cutting process and
By this iridium process, you can cut very hard material also. Even tungsten is a part make other in a hard. Okay, so by this iridium process, you can easily cut, and there is no chances of getting the tool wire. ओके अगर मैंने कन्वेंशनल मशीनिंग से मशीनिंग करूँगा टंगस्टन को देन टूल वायर आउट होने की देन टूल वायर आउट कैसे होगी हाई हीट जनरेट होगी हाई जनरेट टूल प्रेटर वायर क्रैंक वायर जो होता है वो वायर आउट हो जाएगी एंड means for high hard material it is not possible but using this wire TDM process it is very easily you can cut there is no chances of getting wire out of the tool इसमें wire यूज कर रहा हो तो इसमें तो wire out होने का कोई चांसेस ही नहीं है okay and very economical machining process means just use the wire and dielectric media okay clear hello Yes, sir. Yes, sir. Mm, yeah. Almost so, application of iridium is a special form of iridium process. This iridium is a special form of EDM process. Used a continuously moving conductive wire electrode material removal occurs as a result of same result, the same process. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वार टेबल इनका अदर वार टेबल में मूव कर पाऊंगा नहीं तो जो वायर है मेनली वार टेबल जो है वार टेबल मूव किया जाता है जिसमें वो हाथ से होल्ड किया जाता है उसको मूव किया जाता है वायर को मूव नहीं किया जाता है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेट होगी ओके तो वायर को कांस्टेंट रखा जाता है एंड जो वार टेबल है वार टेबल मूव किया जाता है तो CNC प्रोग्रामिंग okay means according to the profile table move होगी and according to the desired profile uh, by using this iridium you can get the desired shape of the shape and size of the product okay the application machining of super hard material. Okay, not a hard means even ultra high hard material can be machined by this iridium process. Like a polycrystalline diamond, not only diamond, polycrystalline diamond, cube carbon nitride. Okay, and other composite material. So they're very high, means not only hard, ultra hard material can be cut by this EDM process. Okay, means the poly crystalline diamond, diamond can be cut. Okay, डायमंड तो हार्ड होती है डायमंड मटेरियल को ऐसे तो कन्वेंशनल मशीनिंग से कैसे काट करूँगा ओके है ना so this iridium process is a very it's, carbon fiber composites are widely used in aerospace, nuclear, automobiles, chemical industries, but conventional machining is difficult. So to this, for the machining of this carbon fiber composites, carbon fiber composite is actually very hard material, and not only hard, it's very low weight, high strength material. Okay. तो दैट्स व्हाई दिस मटेरियल यूज इन एरोस्पेस में यूज किया जाता है इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है बट जो वेट है वेट बहुत ही कम है ओके मीन्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इसको कहते हैं मीन्स वेट बाय स्ट्रेंथ रेशियो ओके बहुत हाई तो ये जो मटेरियल है उसमें भी बाय वायरिडियम मटेरियल ओके most of the industry already use किया जाता है जो industry hard material use करते हैं okay
The applications of EDM process, EDM insulators, this EDM will this EDM process also insulator. In textiling industry, the application of EDM process is very vast application. So advantages, the complex shapes can be cut, extremely hard material can be cut, very small workpiece can be cut. Okay. There are no direct contact between the tool and the workpiece, so therefore uh, delicate sections and the weak material can be machined without any distortion. So, उनकी जो material very soft है, very soft है, those material also can be cut without any distorting, means without any deformation. Okay, both surface finish can be easily obtained by this machining process. Apart from this, some disadvantages are there like a slow rate of material removal, means the material removal, slow rate removal. The economic production, the surface finish expressed price it should not be so fine. The surface finish fine होती है, but should not so fine. The additional time and cost used for creating electrodes for the RAM or sinker radium process. Producing sharp corners on the वर्कपीस is difficult. अगर sharp corner होगी क्योंकि जो टेबल है टेबल को मूव करना जरूरत है, तो इवन वायर जो यूज कर रहा हो वायर का एक डायमीटर भी है, तो अगर सपोज रेक्टेंगुलर टाइप की प्रोडक्ट की जरूरत है, तो टेबल हो जो है टेबल को ऐसे अलॉन्ग दिस एक्सेस मूव करनी है, अगर हम से ऐसे यहाँ अगर मूव करूँगा देन ऐसे मूव करनी है, तो जो वायर है वायर जो यूज कर रहा हूँ तो वायर की जो वायर उसका भी डायमीटर है, तो ड्यूरिंग दिस कॉर्नर जो आएगी या जो आएगी तो उसमें बेसिकली हाफ कॉर्नर नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इससे कार्बेचर मिलेगी। ओके, तो दैट्स हाफ कॉर्नर नहीं मिलेगी। ओके, especially car consumption is very high, power consumption is high, excessive tool wear occurs during the machining. Electrically non-conductive materials cannot be machined only with a specific set of the process, means जो material electrically conductive नहीं है तो material cannot be machined by this is the machining process. But so many the advantages of this machining process is more compared to the disadvantages. Okay, very highly applicable to machining process, means this machining process used widely in most of the machining manufacturing industry. Okay, clear? Okay, sir. Okay, Clear है sir. okay. Your next class, है अभी अभी तो नहीं है सर, 1 बजे है, वो तो आपकी आपकी क्लास गए है। हैं? ओके, so जी सर। next process मैं बात कर रहा हूँ, that is chemical machining process. Okay. So this is a electrochemical machining process. So the principle of this machining process is the works on the principle of chemical reactions. Okay. So that's why it is called electrochemical machining. Means chemical reactions, chemical reactions with the presence of a electric current supply. Okay. So how this happen? So just see here some. चार्ज हो गया तेरा फोन? लैपटॉप चार्ज है, थोड़ी देर लगा लूं चार्ज। Okay. So just see here some ball are removing, है ना?
just means see here in this process similarly the electric current is passed passed to the tool to the workpiece, and the tool and workpiece are connected to two different terminals of the electric supply. Okay, and just see here here from this ball. Hello, some ball are removed from the surface, and हम्म. just see here some bubble type are removing from the surface, है ना? यहाँ पे remove हो रही है ना? So these actually nothing but uh, either positive ions or cations. Okay, so I will discuss how this uh, machining will perform. So have you any idea about the electroplating? Yes, sir. So how this electroplating works? सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक एक कंटेनर में दो एक कैथोड एनोड लिए जाते हैं और Yes, उसमें उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है दोनों को. yes, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो एनोड है mm, उससे क्या कहते हैं, एक जो भी हमें मतलब सेम सेम ही क्या कहते हैं जो कैथोड होगा उसी क्या कहते हैं उसी का एक कोई सल्फेट या उसी का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन का हम वो लेंगे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें उनको प्लेस mm, करेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे एनोड से जो है वो मटेरियल क्या होगा वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा और वही उसमें से लिक्विड में से वो कैथोड पे मतलब डिपॉजिट हो जाएगा. तो deposit of इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. yes, yes, electroplating कहते हैं yes. Good. तो इसमें एनोड एंड कैथोड रहती है, तो एनोड का जो मटेरियल है वहाँ से रिमूव होकर केमिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो उसमें जो मटेरियल रिमूव होकर क्या होगी, कैथोड में आकर वो प्लेटिंग होगी. ओके, अगर मैंने सेम प्रिंसिपल यूज करूंगा मीन्स जो एनोड है, दिस एनोड विल कनेक्टेड टू द वर्कपीस. तो आर्क जो वर्कपीस है वो एनोड से वर्क एज एनोड, एंड जो टूल है वो दिस विल वर्क एज कैथोड. तो वर्कपीस अगर एनोड काम करने तो व्हाट विल हैपन, वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होगी, है ना? सेम प्रिंसिपल एनोड जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो एनोड है उसमें उससे क्या हो रही है, मटेरियल रिमूव होकर सेम मटेरियल कैथोड पर आकर वो प्लेटिंग हो रही है. ओके, अगर यस सर. अगर मैंने एनोड जो है इस एनोड और किस विल एनोड आर्टिस्ट को मैंने एनोट कर रहा हूँ, एंड जो टूल है उसको मैं कैथोड कर रहा हूँ. तो आर्टिस्ट को एनोट करूँगा तो क्या होगी, आर्टिस्ट से मटेरियल रिमूव होकर टूल पर आकर वो आर्टिस्ट से मटेरियल रिमूव हो रही है ना? एनोड से तो रिमूव हो रही है. तो दिस प्रिंसिपल ये सेम प्रिंसिपल ये किया जाता है मीन्स ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रिंसिपल है सेम प्रिंसिपल, बट इसमें जो एनोड है वर्कपीस को एनोड में कनेक्ट किया जाता है. ओके, जो कैथोड है टूल को कैथोड जो कैथोड है तो टूल को ये किया जाता है. तो एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से वो वर्कपीस से कनेक्ट किया जाता है, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल से वो टूल से कनेक्ट किया जाता है. ओके, so just this is the reverse process of electroplating. Electroplating में हम लोग एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, बट इसमें लेयर रिमूव कर रहा हूँ. ओके, मैशनिंग मीन्स लेयर रिमूव कर रहा हूँ और मटेरियल रिमूव कर रहा हूँ. ओके,
So this actually anodic dissolution process is called anodic dissolution process. Here workpiece and tool are connected. Workpiece is connected to the anode and the tools are connected to the cathode. And a um, and the gap between the anode and cathode maintained, this is called inter electrode gap. Which is in process this the reverse electroplating process. Okay, so electroplating process में क्या रहती है इसमें electroplating process में material deposit हो रहा था और उसमें material remove हो गई from the workpiece. Most widely used electrolyte in this process is sodium nitrate solution. Sodium nitrate and sometimes copper sulfate भी यूज किया जाता है सोडियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट बट इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज नहीं किया जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड का कोरोशन होने का चांसेस है ओके तो सोडियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन यूज करूँगा और कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट और आयनाइज होगी अगर कॉपर सल्फेट में तो कॉपर प्लस एंड सोडियम माइनस कॉपर 2 प्लस एंड सोडियम 2 माइनस सेपरेट होगी ओके तो प्रिंसिपल क्या है जो टूल so in the actual process distinction cathode cathode tool cathode is as a tool and this and the shape of the tool is just a mirror image of the means mirror image of the desired shape of the workpiece. Okay. And so workpiece का जो मैं desired product चाहूँगा desired shape of the product तो उसको shape की just mirror image होना चाहिए the tool. Okay. The tool should be the mirror image of the desired product. Okay. So so just see this is the tool. Okay, so this is actually before means initial stage of the ECM process. This is the workpiece material. So whenever you means move this tool towards the workpiece and make a desired distance and passing the current between these workpiece and tools and use solution either sodium copper sulfate or sodium chloride so we then out of hand this say इलेक्ट्रॉन ये होगी देन जो टूल की जो शेप है अकॉर्डिंग टू दिस शेप डिजर्ट और पीस से मीन्स उसको जस्ट मिरर इमेज शेप बन जाएगी ओके A gap between 0.05 to 0.7 mm is provided between the tool and the workpiece, and the electrolyte flows through the gap at the velocity of 30 to 60 minutes per second. Okay, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्लो किया जाता है तो जैसे जो डेब्रिस एंड शीट्स फॉर्मेशन होगी उसको कैविटी से निकाल जाएगा एंड एक गैप between the tool and the RPC maintained about 0.05 to 0.7 mm. Okay. Electrolyte is pumped at a very high pressure. very high pressure में electrolyte pump किया जाता है तो जो electrolyte यूज होगी वो सर्कुलेट किया जाता है रिसर्कुलेशन किया जाता है तो फिल्टर रहती है उसको फिल्टर वो फिर रिसर्कुलेट करके और यूज किया जाता है ओके Electrolyte must be recirculated at the rate sufficiently high to conduct the current between them and to carry the heat. Okay,
जो इलेक्ट्रोलाइट पे यूज करूँगा, इस इलेक्ट्रोलाइट को कभी फ्लो करना चाहिए एंड रिसर्कुलेट करना चाहिए। तो जो हीट जनरेट होगी और हीट से ट्रांसफॉर्म होगी, तो वो हीट लोकलाइज एरिया में नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उनका उनको डेब्रीज और चीज जो जनरेट हो रही है, उनको आपकी चीज जो रिमूव हो रही है, इस रेडिएशन केस से उनके रिमूव फ्रॉम द cavity से वो निकल जाएगा। Okay. So metal is removed from the warp by dissolution through the electric action and the cathode state is reported from the warp. The electric current is of the order of 50 to 40,000 ampere, 5 to 35 direct current voltage supply किया जाता है। At a current density of 22 300 ampere per centimeter square. Okay. So the process, the principle of this machine process is कैसे the process होती है। तो सपोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मैंने यूज कर रहा हूँ, तो अगर इसमें कार्बन पास करूँगा तो सोडियम क्लोराइड विल आयोनाइज into it will break also like sodium plus and chlorine minus. Okay. And so water also will break H plus and OH minus. Okay. So this solution, अगर if this sodium chloride solution, तो इसमें सोडियम क्लोराइड है एंड वाटर भी है। तो दिस सोडियम क्लोराइड will ionize the sodium plus and chlorine minus ion, and this water is ionized as H plus and OH minus ion. Okay. So the hydrogen ions will take away electrons from the cathode tool, and from the hydrogen gas workpiece, that is connected to anode. RP ions would combine with the electrode ions and to form the expansion. Okay. तो सपोज जो आर पीस है, आर पीस से तो आर पीस एक्चुअली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस अगर सपोज जो आर पीस है वो आयरन की है,
आवाज आ रही है अभी? यस सर। थैंक यू सर। बस थैंक यू सर, कितने आ रही है सर, आप पढ़ाइए, कोई बात नहीं। ये अब आप पढ़ाइए, कोई नहीं, आ रही है आवाज आपकी। ओके। बाकी सब भाग गए थे। उनको लगा सर आपने कहा कि ओके ओके सर, तो वो इसलिए उनको लगा कि हाँ, थैंक यू इसलिए कह भाग रहे हो। गए। ओके, ठीक है। सो ये जो आर पीस है, आर पीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो सपोज जो आर पीस से आयरन, आयरन की मेटेरियल, आयरन मेटेरियल की है। तो दिस आर पीस विल इसमें आयरन क्या होगी, आयरन प्लस हो जाएगी। ओके, पॉजिटिव आयरन निकलेगी ऐसे। ओके, now suppose सोडियम क्लोराइड मीडियम मैंने यूज करो, सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड विल ionize the sodium plus and chlorine minus. Okay, uh, two sodium ion and one Cl2 minus ion. Okay, and sodium chloride की solution है, so means water भी है। So this water is will ionize as H plus and OH minus. Now this obviously this positive ion will attract to the negative ions. So this Fe will Fe will attract to the negative ion. So Fe will combine with Fe plus to Cl minus. So FeCl2 will form, and this Fe ion so will also attract to the negative hydroxide ion. Okay. Okay. So this Fe plus ion will attract to the so this positive ion will attract to negative ion. So Fe plus that is the positive ion to negative ion. So this Fe plus will form and uh, attract to the hydroxide ion, hydrogen atom, which will form a FeOH2, and the chlorine and के साथ react करके FeCl2 create होगी। Okay. अंदर ये टूल है, टूल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो टूल नेगेटिव पे नेगेटिव पे है, एंड नेगेटिव टोटल। तो अंदर ये H प्लस आयन है, H प्लस आयन will when it OH minus ion, and इसमें ये H2 and H2 and फिर water are create होगी। Okay, so this as a potential difference is applied between the workpieces, anode and the tool, that is cathode. The positive ions move towards the tool, and the negative ions move towards the workpiece. Okay. And the hydrogen ions will take away from the electrons, uh, take away electrons from the cathode, and from the hydrogen gas. And this H plus ion will one the electrons, and the H2 gas will create, and it will move out.
Similarly, the aerophone atoms will come out through the anode rocky setting, and this iron will emit the E2 minus ion. So this E2 minus ion will actually combine with the H plus ion and the H2 plus will form. Okay. And this Fe ions also react with the fluorine and FeCl2 will form, and this Na plus and OH minus and Na plus and OH minus will react with, and then OH sodium hydroxide will form, and this Fe positive ion also react with hydroxide negative ion, and FeH2 will form. So in this way, FeCl2 and FeOH form and get precipitated on the form of the flask. Okay, so in this way, it can animate the RPC that gradually nascent and get precipitated in the form of the flask. Okay, and so by formation FeCl2 and the FeOH2, Fe plus ion को react होगी, chlorine से वो react करेगी, FeCl2 होगी, and Fe plus ion hydroxide minus ion के साथ react होगी. Okay, means जो Fe है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लिखे गए, and Fe plus react हो रही है, and Fe plus chlorine minus ion के साथ reaction होगी, FeCl2 होगी, and this FeCl2 actually form this flag and office से remove होगी. Okay, so by this these chemical reactions, by these reactions, the material is removed from the ORQ. Okay, so इसमें कौन सी components है, main components और elements in the ECM machine, electrolyte यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड और and tool is the tool is always this tool is actually connected to the native ion, and this tool actually acts as a cathode and passes as a anode. A constant direct current power supply किया जाता है. Okay, and ये जो टैंक है एक फिक्सर टेबल यूज दिस टेबल इज यूज फॉर होल्डिंग द ऑफिस, एंड सारे सेटअप जो है टैंक के अंदर रखते हैं, टैंक के अंदर जो है इसको सेटअप किया जाता है, एंड दिस टैंक इज फॉर collecting the first, means for storing the first solution. The solution is for the tank on the regi, and this solution, actually this solution ऐसे इसको सर्कुलेट किया जाता है, पाँव से सर्कुलेट किया जाता है. ओके, इस इसको रिसर्कुलेटिंग किया जाता है. सॉल्यूशन इसे और जो रिजर्वायर है इसमें लेते हैं, एंड इसको पंप थ्रू दिस पंप को, एंड इसमें एक फिल्टर यूज किया जाता है जो जितने सारे डेब्रिज है उसको फिल्टर करके फ्रेश जो इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट फिर या अप्लाई किया जाता है, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट अप्लाई वेरी हाई प्रेशर, so that इसमें जो यहाँ जो डेब्रिस और चिप्स कलेक्ट होगी तो चिप्स ऐसे रिमूव हो जाएगी हाई प्रेशर. तो these are the main components. तो इलेक्ट्रोलाइट पे तो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगी, so this sodium nitrite, sodium hydroxide, sodium chloride, sodium chloride, a different type of electrolyte use हो सकती है. So main function of this electrolyte, it carries out the current between the tool and the workpiece. It removes the products of the machining and other
insoluble product from the cutting regions. It dissipates the heat produced in the operation. The essential characters of the electrolyte include good electrical conductivity होना चाहिए, okay, नॉन टॉक्सिक एंड केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए से, नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब कोरोसिव होगी तो जो आपकी से वही कोरोडेड हो जाएगी, ओके। लो विस्कोसिटी एंड हाई स्पेसिफिक के हीट होना चाहिए, विस्कोसिटी जो है वो लो होना चाहिए, फ्लो फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होने के लिए हाई स्पेसिफिक की हीट होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग मशीनिंग हीट जनरेट होगी, तो वो मीन्स अगर लो स्पेसिफिक की हीट होगी तो इलेक्ट्रोलाइट यूज करो वो व्यापार होने का चांसेस है, तो हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। High velocity flow over the electrode surface is one of the key factors of steam, means जो इलेक्ट्रोड सप्लाई करूँगा वो हाई वेलोसिटी से सप्लाई करना चाहिए, ओके। It is necessary to prevent the crowding of the hydrogen gas and the debris of the machine, okay। इनसे हाई वेलोसिटी यूज किया जाता है क्योंकि जो डेब्रिस और से निकल रही है फ्रॉम वाटर से उसको रिमूव करना चाहिए, एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोजन फ्लास्क जो रिक्रूट हो रही है उसको भी जो ये करना चाहिए, तो हाइड्रोजन इंप्रूवमेंट हो जाएगी। The most common used tool material is copper, brass, titanium, copper tungsten, stainless steel यूज किया जाता है, ओके। तो हमें इलेक्ट्रोड का फॉल्ट होता है सेटिंग हम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट अगर यूज करेगा तो कॉपर की टूल और brass की और टाइटेनियम और कॉपर tungsten की टूल यूज किया जाता है, okay। Copper actually very high thermal electric conductivity as well as the thermal conductivity. So mainly copper is used for sometimes tungsten or brass or titanium. Titanium has been found to be the most suitable tool, however, it has a tendency to ionize the tool as in the case of sulfuric acid. Okay, so sulfuric acid अगर मैं इसको यूज करूँगा तो titanium is very critical tool material. Other tool materials like aluminum, graphite, bronze, platinum, tungsten, carbide will be used. The accuracy of the tool paper directly affects the RP's accuracy. Okay, so टूल का जो जिस टाइप की प्रोफाइल होगी आर्टिस्ट की, फिर डिजायर डिस्कशन साइज और आर्टिस्ट से सेम मिलेगी, ओके। Electroforming and coal forming are two methods of the tool making. So tool material the general requirement is to conduct of the electricity, electrically high charge conductivity होना चाहिए, इसको भी देखिए rigid enough to take the load due to the fluid pressure, जो fluid pressure में electrolyte जो यूज कर रहा है वो हाई प्रेशर में यूज करेगा, तो हाई प्रेशर को एट हाई प्रेशर तो हाई प्रेशर यूज करूँगा, तो हाई प्रेशर से सस्टेन करना चाहिए खुद को, ओके। तो इट शुड बी रिजिड रिजिड होना चाहिए सो दैट इट सस्टेन द प्रेशर ऑफ द फीड, okay। It should be chemically inert to the electrolyte, and chemically uh, electrolyte actually chemically है, मीन्स सोडियम क्लोराइड और जो भी है केमिकल है, और उसको केमिकल से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ओके। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। It should be easily mechanizable to make it in the desired shape. Means, product,
जिस सेफ्टी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो टूल को भी उनसे इजीली मेशिनेबल होना चाहिए, तो उसका रेप्लिका एक्चुअली बनाना चाहिए। ओके, तो रेप्लिका के लिए बनाऊंगा तो टूल का भी मेशनेबिलिटी होना चाहिए, इजीली मेशनेबल होना चाहिए, so that you can make a replica। ओके, so material removal rate is a formula for calculating the mass of ions dissolved in dissolved. So according to this Faraday's law, that this mass of ions dissolved in kg. Okay, basically W equal to ERT by F is the equivalent weight of the substance dissolved by the current T time, and that is the Faraday's constant. So out of this calculating W, when calculate the material removal rate, this integrates converted W to whatever A so into P. Okay, so this is in meter per second। ओके, डब्ल्यू तो क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू देन यू पुट द इक्वेशन of W, then material will get to E R divided by into mu। Okay, array is the machine area, कितना area machine कर रहा हूँ, B is the voltage, supply voltage, H is the tool or gap, gap between the tool and okay। These are the machining parameters like power supply, कितना power supply कर रहा हूँ, डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई कर रहा हूँ कितना कर रहा हूँ, कितना वोल्टेज को सप्लाई कर रहा हूँ, कितना करंट सप्लाई कर रहा हूँ, करंट डेंसिटी कितनी है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट की जो यूज कर रहा हूँ, किस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूँ, तो क्लोराइड और ये करके हम नाइट्रेट का टेम्परेचर कितनी है इलेक्ट्रोलाइट की, फ्लो रेट कितनी है, प्रेशर कितनी है, डिल्यूशन कितनी है, तो दिस आर द पैरामीटर्स, प्रोटेक्टिंग पैरामीटर्स। वाक्य वाकिंग गैप कितनी है, जिसमें 1 to 2 mm मेंटेन किया जाता है। अब आपका फीड रेट कितनी है, इलेक्ट्रोमटेरियल किस टाइप की है, हम सरफेस रफनेस कितनी मटेरियल। So these are the affecting parameters, पावर सप्लाई वोल्टेज कितनी है, करंट। so this is actually फिश बोन, ये जो डायग्राम है इसको फिश बोन कहती है। ओके, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ दिस डायग्राम इज एक्चुअली लुक लाइक फिश बोन। ओके, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, लाइक सपोज डिफरेंट पैरामीटर जो है, डिफरेंट पैरामीटर का इफेक्ट क्या है। सो इफेक्ट मीन्स मैचिंग इफेक्ट। हो मैचिंग इफेक्ट मीन्स मुझे क्या कैसे परफॉर्मेंस मैंने काउंट करूँगा, लाइक मटेरियल रिमूवल रेट कितनी है। ओके, प्रोफाइल जो मेरी है उसका एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी ऑफ द प्रोफाइल, सरफेस फिनिश कितनी है। ओके, repeatability है कि नहीं। ओके, so these are the measure of performance। ओके, तो जो परफॉर्मेंस है वो कौन सी मेन पैरामीटर से जुड़े हुए, लाइक पावर सप्लाई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोलाइट, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट एंड मिरर टूल, ये टूल यूज करूँगा। तो पावर सप्लाई में कौन कौन सी पैरामीटर है, लाइक वोल्टेज कितनी है, करंट कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, पल्स पीरियड कितनी है। ओके, करंट डेंसिटी कितनी यूज कर रहा हूँ। ओके, मैकेनिकल मीन्स इलेक्ट्रोलाइट मीन्स किस कंपोजिशन की इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है, फ्लो रेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, टाइप ऑफ फ्लो की है, किस टाइप ऑफ फ्लो कर रहा हो, टेम्परेचर कितनी है, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, प्रेशर कितनी है। ओके, so all these parameters will affect the this machining of means performance of
ECM process. मिरर टूल मीन्स जो टूल यूज कर रहे हो उसका एक्चुअली टूल की जो शेप है उसका ही मिरर शेप होगी। ओके, तो उसका डिजाइन जो मिरर है उसका डिजाइन कितनी है, डायमीटर है, जियोमेट्री, ओके, machinability, rigidity, insulation, so all these parameters of the ECM process. This accuracy of ECM, there are a number of the factors related to affect the accuracy of the machining process, like machining voltage, feed rate, electrode temperature, electrode concentration of electrode. So under ideal conditions, a properly designed tooling ECM is capable of holding tolerance of 0.02 millimeter. So 0.02 millimeter tolerance can be possible for this ECM process. Surface finish can be get in the order of zero point 0.2 to zero point 0.8 microns. So no bars on the sharp edges are related on the work. Okay. Other applications, so most common applications of ECM processor very high accuracy. Okay, because there is a no tool where it can be used repeatedly with the high degree of the accuracy. Means very high accuracy can be obtained by the this ECM process. It is commonly used on thin wall, easily deformable and brittle material also. They also probably develop the cracks with the conventional machines. It is used for machine of the very hard heat resistance alloy also. Means this is possible to machine the hard heat resisting alloy also. It is used for cutting cavities and holes in various products. Machining of complex external surface like turbine blades, aerospace components, machining of tungsten carbide, nozzles of alloy steels, all are possible machines using mechanical processes. Any conducting material can be machined by this machining process. So this is actually general conclusion. Means all the materials, all the conducting materials can be machined by this machining process. Advantage, there is no cutting force. इसमें cutting force नहीं जरूरत नहीं है, इनसे like conventional process there is a cutting force is required, but in this case no cutting force is required. So clamping of the work is clamping is not required except for the controlling the motion of the work is heavy. So what is the ऐसे rigid clamping की जरूरत नहीं है. काम की ज़रूरत है, अगर आरसीसी को टेबल को मूव करना चाहते हो तो देन नीड टू होल्ड द it can machine configurations which is beyond the capability of the conventional machining processing. जो conventional machining में तो possible नहीं है, तो machining can be done by this machining process. Very accurate, tolerance up to 0.02 mm is possible. Relatively very fast machining process can machine a hard material on the tool. Means tool का इन conventional machining process में क्या होती है, तो मटेरियल को मेजरमेंट करूंगा उसका हार्डनेस टूल से कम होगी, अदरवाइज टूल द्वारा होता है. बट इन दिस मशीन प्रोसेस यू कैन machine the material which is harder than the tool material. Extremely thin material can be easily work without the distortion. तो material very soft है, very soft है, उस material को काट कर पाऊंगा without any deformation or distortion. Tool wire is nearly absent. इसमें tool wire का कोई finish नहीं है. Better surface finish can get up to 0.2 to 0.8 microns. Surface finish can get by this machine process. Some disadvantages are like solution use किया जाता है इसमें, तो solution use there are palm tank, filter, scissors, keeping the solution conductivity constant constantly. uh, solution को electrically conductive होना चाहिए.
more expensive than the conventional management process है conventional management process से ज़्यादा expensive है costly है need more area of installation है तो जो machining का जो साइज होगी वो ज़्यादा होगी तो more area is required electrolyte destroy the equipment not environmentally friendly high energy consumption required that for the toxic gases and the aerosol produce the ECM chemical attacks by electrolytes the risk of the electric shocks there danger of the burn of the case of short circuit between the positive and the negative plates make there any chances of getting short circuit if not debris are removed from the cavity. Okay. Mechanical process from there danger of the fire and explosion. Okay. So thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you. Any query? No, sir. Okay. Thank you very much.